ज़्यादा करके मिक्स करके जो है वो पेश किए हैं। ये नज़म बुनियादी तौर पर एक एडोलेसेंट बच्ची की जो ड्रीमिंग है, डे ड्रीमिंग है, उस पर मुश्तमिल है। एक छोटी सी बच्ची जो है वो एक डेंटिस्ट की दुकान पर अपनी आंट के साथ आती है और वहाँ वो जिन महसूसात और तजर्बात में से गुज़रती है, उन तजर्बात और महसूसात को इस नज़म का मौजू बनाया गया है। तो आइए नज़म की टेक्स्ट का आगाज़ करते हैं। दरमियान में साथ साथ हम इसके आइडियाज़ को भी क्लियर करेंगे। In the waiting room, and the text please. In Worcester, Massachusetts, I went with Aunt Consilio to keep her dentist's appointment and sat and waited for her in the dentist's waiting room. The first image of the poem or the scene of the poem has been set in the opening lines. It is the city area. Worcester is the city, the town in the state of Massachusetts where she has painted the scene. I went with Aunt Consuelo. This is surely the poetic name of her real aunt. To keep her dentist's appointment, she went with her aunt. The poetess went with her aunt Consuelo to a doctor, a dentist. Surely our aunt might be suffering from some dental pain or dental disease, and sat and waited for her in the dentist's waiting room. And there she had to sit in the waiting room of the doctor. And her aunt went into the dentist's main operating room or the theater or the patient's room, that is. बेटे जो ओपनिंग सीन है, या नज़म जहाँ पूरे महसूसात जहाँ उस शायरा के जो है वो जिन महसूसात में से तजर्बात में से गुजरेगी, सीन बहुत सादा करके हमारे सामने रखा गया है। इसकी एंट जो है वो उसके दांत में कोई ख़राबी है, तो वो डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ले रखी है। एंड शी इज़ एज अ चाइल्ड फोर्स टू अकम्पनी हर एंट। तो वो अपनी एंट के साथ जो है वो, जिसका फ़र्जी नाम यहाँ कंसेलो है, ये हकीकी ज़िंदगी में देयर इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल टच। बिशप, आपको पता है, याद है कि हमने पिछली इसकी बायोग्राफी में देखा जैसे कि ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देहाती इलाके से छोड़कर जो है, शी इज़ फोर्स टू कम विद हर एंट, हर मदर सिस्टर। तो अपनी आंटी के साथ ये शहर में रहने के लिए आई हुई है मजबूरन। तो पेरेंटलेस चाइल्ड है रादर। इसकी अपनी माँ जो है वो आपको पता है सैनिटोरियम में है। तो ये आंट के दांत में दर्द या कोई खराबी है, तो वो डेंटिस्ट से जो है वो इलाज करवाने आई है। एंड द चाइल्ड who is not more than 6 or 7 years old. She is sitting in the waiting room of the doctor waiting for her aunt to come out and they might go back to the home. तो मंजर जो है वो, I went with Aunt Consuelo to keep her dentist's appointment. It is a forced appointment. She has to go to the doctor to relieve of her pain, her suffering, her disease, and the child is also forced. याद रखें, वो भी मजबूरन गई है टू कीप हर डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट। अगर वक्त निकल गया तो डेंटिस्ट से फिर अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल, लिहाजा उसे आना पड़ा। और दूसरी तरफ ये बच्ची भी जो है ये मजबूरन अब इसे बाहर इंतज़ार गाह में बैठना है। सैट एंड वेटेड फॉर हर इन द डेंटिस्ट वेटिंग रूम। When the setting is set, the poetess now goes from this simple setting of a doctor's clinic to some other images
of the present and past and future. She mixes these images of present, past, and future in a very beautiful manner, rather very magnificently. She is able to give us a picture of a world of a child that is traveling through present to past and then from past to future and from present to future as well. This journey, this traveling is uh, amalgam of different images, visual images rather. The poem is often said to be a poem of visual images. As you know, the poetess herself was a painter, and it enables her, rather ennobles her to make the poem a visual commentary on the life of a child. It was winter. It got dark early. This is the description of, after describing the scene of the dentist's clinic, the operating room, and the waiting room. Now she comes ahead to the next image. It is a wintry season, and as it happens in winter, it gets dark very soon. Outside the clinic, outside that waiting room, it is darkness all around. It is also metaphorical. The waiting room was full of grown up people. Remember this point now. All grown up people are sitting there waiting for their turn to be checked up or operated upon by the dentist, the doctor. Architects and overcoats, lamps and magazines. It is early part of the 20th century. You know, there is uh, it is usual for the people to wear overcoats and architects long leather shoes to keep away the cold, to keep away the wintry season. Lamps and magazines. The other things found in the waiting room of their doctor, of their dentist, are the lamps burning there to illuminate the room, and some magazines are put here and there on tables or on chairs. बेटे ये है मंज़र जो है उसको अब एक्सपेंशन दी गई है. मंज़र एक वेटिंग रूम का, डॉक्टर के क्लिनिक के वेटिंग रूम का. यहाँ हज़ार है बड़े उम्र के लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं. was full of grown up people, adults. A child is sitting among the adults, the waiting room. बाहर तारीकी छा गई है और अंदर जो है वो इल्यूमिनेशन के लिए, लाइट के लिए लैंप्स रोशन हैं. चांद मैगज़ीन वहाँ पड़े हैं मेज़ पर, कुर्सियों पर, और लोगों ने अपने ओवरकोट्स वहाँ खूंटियों से टांग रखे हैं, या लंबे लंबे वो लेदर शूज़ जो कि वो बाहर की सर्दी में पहने जाते हैं और लेकिन डॉक्टर के कमरे में आकर ज़ाहिर है वो उतार दिए जाते हैं, उनसे आवाज़ पैदा होती है. वो जो लॉन्ग लेदर शूज़ हैं, दे हैव just put them aside along with their overcoats which are hanging on the wall. तो बेटे ये मंजर को एक्सपेंशन दी गई है. Now the presence of these grown up people makes it significant. A child is sitting among the adults. और यहाँ गोया एक छोटी सी दुनिया जो है वो बिल्कुल फिलिंग स्टेशन जैसे नज़म हमने देखी है. जैसे वहाँ एक आपको माइक्रोकॉस्म ऑफ होल वर्ल्ड दिखाई देता है, यहाँ भी बेटे एक माइक्रोकॉस्म ऑफ द होल वर्ल्ड दिखाई देता है. वेयर देयर आर ग्रोन अप्स एज वेल एज चिल्ड्रन आर पुट टुगेदर. ये यहाँ जो है वो ये एक छोटी सी दुनिया बना दी गई है. अगरचे वो वेटिंग रूम है और अंदर जो है वो पेनफुल ऑपरेशन ऑफ ऑन अ पेशेंट इज गोइंग ऑन. द ट्रीटमेंट यू मे से by a dentist is going on, by a doctor is going on to relieve the pain, to relieve the pain of suffering. तो ये सब सिग्निफिकेंट है. और ये छोटी सी एक दुनिया, एक कम्युनिटी
यहीं जो है वो उस कमरे में गोया एक दुनिया आबाद है, जिसमें ग्रोन अप्स भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं। तो वहाँ जो है वो जो मंज़र है उसमें कुछ मैगज़ीन्स, ओवरकोट्स, लैंप्स वगैरह जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एंड देयर इज़ नथिंग एल्स एक्सेप्ट द वेट इटसेल्फ। इंतज़ार जो है वो एक बिन बुलाए मेहमान की तरह, वो चूँकि इस कमरे का हिस्सा है, वेटिंग रूम इसीलिए इसका नाम है। What she is waiting for is not simply the arrival and return of her aunt from the doctor's clinical laboratory or clinical room. It is also the wait for her as a child to go into adulthood, into grown-up world. तो बच्चों को बड़ा होने की जल्दी होती है, मैच्योर होने की जल्दी होती है, तो ये उस वेट की तरफ इशारा भी है। As you know very well, she was forced to go into the adult world by her uncle when that brutish man exploited her physically as well as sexually as a child, as a girl. That experience might have affected uh, darkly the poetess here. This weight might be the weight of that, the reason behind the cause of that exploitation by her uncle at a very early stage when she was just a girl. तो बेटे ये उस एक्सपीरियंस की तरफ भी इशारा है। वेट जो है यहाँ वेट अडल्टहुड का वेट भी है। शी इज़ एंक्शस एज अ चाइल्ड, और ये आहिस्ता आहिस्ता अब हमें महसूसात और विजुअल्स की तरफ जो है वो शायरा जो है वो लेकर जाएगी। द सीन इज सेट, इट इज़ क्लियर, नथिंग एम्बिगुअस, वेरी सिंपल लैंग्वेज, डे टू डे, जैसे कि इसकी आदत है बिशप की। शी यूजेज वेरी कॉमन वर्ड्स एंड वेरी कॉमन इमेजेस टू क्रिएट अ वर्ल्ड that is not common at all. That is metaphorically very grand type of presentation of life, the humble life around her. In the next stanza of the poem, Bishop explains the situation and her first movement sitting there as a waiter. My aunt was inside. Her aunt Conselio was inside the dentist's room. She was being treated there for some kind of a pain or a disease of her teeth. What seemed like a long time. As a child, she felt that she has been waiting there for the return of her aunt for a very long time, and it is always very boring and very tiresome and awkward to be kept like this, waiting for somebody or waiting for some train or some bus or something like that. And while I waited, I read. To while away time, we often indulge in some kind of reading newspapers or looking at certain articles found in shape of any piece of paper around us. And here, luckily, she has got a magazine, the National Geographic. I could read. Remember, as a child, 6 or 7 years old, she can still read these articles, these writings, newspapers and magazines, and carefully studied the photographs. जैसे कि बेटे ये हम होता है, हम पहले कैजुअल लुक में कोई मैगज़ीन हमारे हाथ में आए तो हम पहले जब वो तस्वीरों पर हमारी नज़र जाती है, फ़ोटोग्राफ्स पर जो पिक्चर्स वहाँ दी गई होती हैं, तो इसने भी वक्त गुजारने के लिए seemed like a long time. It was getting on her nerves as a child to be kept waiting there, and therefore to indulge in some kind of activity she found
a magazine lying there, and it was the magazine entitled The National Geographic. Uh, अभी हम इसकी सिंबॉलिक मीनिंग को नहीं छेड़ेंगे, अभी हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाकर जो है वो देखेंगे कि ये भाई वाई नेशनल जियोग्राफिक, वाई नॉट सम काइंड ऑफ अदर मैगजीन इन द पोएम. इसने ज़ाहिर है ये बच्ची है ना, तो इसको वो वहाँ तस्वीरें ऊपर होंगी मैगज़ीन के टाइटल पेज पर जो कलरफुल होंगी, तो उन्होंने अट्रैक्ट किया इसको. साइड पर टेबल पर पड़ा है मैगज़ीन, तो इसने जो है वो मैगज़ीन उठा लिया टू वाइल अवे टाइम, वक़्त गुजारने के लिए, ताकि वो जो इंतज़ार है वो उसकी बोर्डम को किल किया जा सके. तो टाइटल जो है वो नेशनल जियोग्राफिक है, और केयरफुली स्टडीड द फोटोग्राफ्स. फर्स्ट हर अटेंशन वाज टूवर्ड्स द फोटोग्राफ्स ऑफ द टाइटल, एंड देन शी explored the inside of that नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन. हमें 2-3 चीज़ें उसने बता दी हैं जल्दी से इस एक्टिविटी के साथ ही. शी वॉज सिटिंग देयर आइडल among the adults. She could not talk to them as she was a child. दूसरे भी ज़ाहिर है डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठे हुए जो इंतज़ारगाह में लोग होते हैं, उन्हें खामोशी से बैठना पड़ता है. नो नाइस साइलेंस इज केप्ट देयर जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी. और दूसरे फ़िक्र और परेशानी भी बोलने से रोक के रखती है. तकलीफ़ जिसे कहते हैं, पेन एंड सफरिंग ऑफ द डिजीज़. तो वो सारे मरीज़ हैं, या मरीज़ों के साथ आए हुए अडल्ट लोग हैं जो कि वेटिंग रूम में बैठे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं. तो ये भी किसी के कॉम्प्लीमेंट में, अपनी आंट के कॉम्प्लीमेंट में जो है वो वहाँ आई है बच्ची. शी हैज़ टू सिट देयर एंड वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड टू किल टाइम एंड टू वाइल अवे टाइम शी इज़ फोर्स्ड टू पिक अप अ मैगज़ीन entitled as the National Geographic, and she tells us that she is able to read. You should not think that she is not able to read anything as a child. तो यानी इतनी बड़ी ज़रूर है कि वो लिखने पढ़ने के काबिल है. तो उसने जो ना पहला काम ये किया कि हर अटेंशन went towards the photographs. जैसे आम ज़िंदगी में भी होता है कि हम सबसे पहले अगर अखबार भी ताज़ा लें तो हम उसकी तस्वीरें और वो जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो हमारी नज़र में आती हैं. तो इसकी नज़र भी सबसे पहले मैगज़ीन के टाइटल पर पड़ी, एंड शी फाउंड दैट इट इज़ द मैगज़ीन ऑफ द नेशनल जियोग्राफिक, द फेमस मैगज़ीन. यू नो, आज तो ये चैनल भी है ना, नेशनल जियोग्राफिक चैनल. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नज़म में शुरू में ही यहाँ जो है वो बता दिया गया कि दिस मैगज़ीन इज़ गोइंग टू बी अबाउट एडवेंचर्स, अबाउट एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड. तो नेशनल जियोग्राफिक का आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्री और जो खुसूसी तौर पर मिस्टीरियस वर्ल्ड है, हिडन वर्ल्ड है, उस तरफ जो है वो इसका रुख, तहकीकात. और ये पुराना मैगज़ीन है, सदियों पुराना. 19th सेंचुरी में इसकी प्रिंटिंग शुरू हुई, और अब तो ये बहुत तरक्की कर गए हैं. इनके अपने चैनल्स हैं, कई मैगज़ीन भी हैं. तो ये वही नेशनल जियोग्राफिक है दैट इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड एक्सप्लोरिंग, स्पेशली द वर्ल्ड ऑफ द वाइल्डरनेस, द वर्ल्ड ऑफ द एनिमल्स, यू मे से एनिमल किंगडम. और इनका ज़्यादा फोकस है तहकीक, रिसर्च. तो ये एक रिसर्च मैगज़ीन है, लेकिन अपने क़ारीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ज़ाहिर है इसमें भी कुछ वो स्पाइसी स्टोरीज आर इंक्लूडेड. Dear students, the previous stanza, the adjacent stanza we just went through, tells us that she can read, but
Very amazingly, very startlingly, she has not started reading it. She is just going from one visual to the other visual, from one image to the other image, from one picture to the other picture, and the magazine, the photographs, as she has told us. So, the very first image that she uh, presents from the page, the inside page of that magazine, National Geographic magazine, is horrific one. The upcoming scenes presented here in this poem, taken from the supposedly an issue of the National Geographic magazine, are very awkward, rather horrifying type of pictures of life found in that magazine, presented in that magazine, painted in that magazine. The first image she comes across, the first photo or the first page she comes across is the photo of a volcano, the photograph of a volcano, the image of a volcano, the inside of a volcano, black and full of ashes. Then it was spilling over in rivers of fire. The image is again very clear, it is not ambiguous. बट पहली तस्वीर जो बच्ची ने देखी, 6 और 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड, वो पहली तस्वीर जो है वो हॉरिफाइंग है। ज़ाहिर है जी, एक वोल्केनो जो है, ये इनसाइड ऑफ ए वोल्केनो, फिर तस्वीर सिर्फ दूर से वोल्केनो की नहीं है, बल्कि ये एक करीबी इमेज है जिसमें उसको अंदर से जो है वो वॉल्केनो को उबलता हुआ दिखाया गया है। एंड इट इज़ ऑल ब्लैक, श्योरली इट इज़ डार्क ब्लैक एंड फुल ऑफ एशेस। राख उड़ रही है हवा में, ये गर्म राख है, लावा उसका जिसको आप कहते हैं वॉल्केनो का। इट इज़ बर्स्टिंग आउट, देन इट वाज स्पिलिंग ओवर इन राइवल्स ऑफ फायर, और वहाँ से जो है वो बर्स्ट निकलते हैं, आपको पता है स्पिलिंग आउट, आग के शोले जो हैं वो राइवर्स ऑफ फायर, स्ट्रीम्स ऑफ फायर जो हैं वो लावे के साथ साथ ऊपर को उबलते हैं। तो इट इज़ ऑल वेरी हॉरिफाइंग, हॉरिफिक, फ्राइटनिंग, डेंजर, मौत। इट इज़ ब्लैक। दिस image on the very onset points out to the danger present in the outside world. The question is, the child is sitting in the waiting room, rather a very safe inside of a waiting room. Suddenly, she just jumps into a dangerous world, the world of the outside. तो वो छोटे से कॉस्मोस से निकल के अब बड़े कॉस्मोस पर की तरफ चल निकली है। और ये पहला इमेज जिससे इसका वास्ता पड़ता है अमली ज़िंदगी में, वही इमेज जो है वो बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस है, डिस्ट्रक्टिव है, अर्यूनियस है। ये जो आतिशफ़शां है, इसका मंजर देखें, गर्मी, हिद्दत, मौत, इसका जो लावा है बहने वाला, ब्लैकनेस और फायर burning again. Is it a simple fire or is it the fire of the hell of life? बहरहाल ये सवाल हम एक्सप्लेनेशन के लिए छोड़ते हैं। ये बहरहाल आग की तपश है। तो ये पहला इमेज ही जो है, इट इज़ क्वाइट हॉरिफाइंग, पॉइंटिंग टूवर्ड्स डेंजर्स ऑफ द लाइफ आउटसाइड हर ओन लाइफ, दैट इज़ द लाइफ एज ए चाइल्ड। तो ये इमेज जो है वो अब उसकी एपिफनी की तरफ जो है वो लेकर चलेंगे बेटे, ये इसको याद रखना है प्लीज़। शी विल गो थ्रू सम काइंड ऑफ एपिफनी, दैट इज़ सेल्फ रेवलेशन, दैट इज़ सम काइंड ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, सम काइंड ऑफ चेंज इन हर पर्सन। शी विल surely mature here, sitting here, spiritually, metaphorically.
She will change from a child to an adult suddenly, and this sudden change is very horrifying, very dangerous. तो पहला इमेज बेटे, पहली तस्वीर जो इसको जिसका सामना इसने किया वो ये है. दूसरी इमेज, द सेकेंड इमेज. These are images and you may mark them out one by one. The first image she faces is the image of a volcano. That is a symbol of death, destruction, danger. Oza and Martin Johnson, the second image please, dressed in riding breeches, laced boots and pith helmets. The second picture, the second photograph she sees on the next page of that magazine is the picture of two world explorers, famous world explorers in the early 20th century. These are Oza and Martin Johnson. Our lady, Oza and Martin Johnson. बिल्कुल नेशनल ज्योग्राफिक की मानद बेटे, ये जैसे आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर भी देखते हैं आजकल कि वो वर्ल्ड एक्सप्लोरर जो हैं वो निकलते हैं बाहर कैमरा और अपना इक्विपमेंट लेकर इन सर्च ऑफ सम काइंड ऑफ मिस्टीरियस हिडन हैबिटेट ऑफ द एनिमलिज्म और द एनिमल किंगडम. तो ये मियाँ बीवी हैं दोनों, ये भी वर्ल्ड ट्रैवलर हैं और स्पेशली जो है ये अफ्रीका को जो है वो एक्सप्लोर करने निकलते हैं. और उस ज़माने में ये कहानियाँ भी बेचकर इन पर वैसे कई बाद में फिल्में भी बनी, एडवेंचर मूवीज़ भी ओजा और मार्टिन के करैक्टर पर, और वैसे रियल करैक्टर्स थे ये. ड्रेस्ड इन राइडिंग ब्रीचेस. तो ये अगली तस्वीर जो है ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं जिनकी तस्वीर ये मैगज़ीन में देखती है, ये जो है वो घोड़ों पर सवार होने के लिए वो जो शॉर्ट ट्राउज़र्स पहने होते हैं शिकारियों ने, शिकारी लिबास में उनको देखती है. ब्रीचेस भी शिकारी लिबास होता है टाइट फिटिंग के साथ, लेकिन शॉर्ट स्लीव्स वगैरह वगैरह, शॉर्ट ट्राउज़र्स. लेस्ड बूट्स, इनके जो बूट होते हैं वो भी लंबे, आपको पता है होते हैं वो तस्मे वाले बूट. एंड पिथ हेलमेट्स, और ये ख़ास किस्म के शिकारी हैट होते हैं, ये ठोस हुआ करते थे, मोटे थोड़े से, पिथ थोड़े से मोटेपन को ज़ाहिर करते हैं. स्ट्रॉन्ग हैट्स, ये सफारी हैट्स भी इनको कहा जाता था, शिकारी आमतौर पर पहनते थे. ये बिल्कुल वो तिनकों वाला हैट जैसे वो गोल सा हुआ करता था पुराने वक्तों में, वो मूवीज़ में अब देखा करते थे कि वो हिच हाइकर्स पहनते थे. घोड़े पर सवार एक शख्स, हाथ में गन पिस्टल और वो ऊपर एक हेलमेट. तो ये बिल्कुल वैसा ही ये जो है वो ये शिकारी सूट पहने हुए हैं, हेलमेट्स हैं, ब्रीचेस हैं. तो दे आर रेडी टू गो अहेड राइडिंग ब्रीचेस. गोया ये देखे बड़े तरीके से इसने इमेजेस का इंतखाब कैसे तरतीब से किया है. In depicting these images, the poetess has very carefully given them step by step. First, she encounters the picture or the photograph of a volcano, telling her, warning her that a danger world is outside. She has to face the dangers of the world while going through this journey of epiphany, self-revelation. Then the second image she chooses is the image of the world travelers. She is rather, as a child, has to go on world travel. She is now not herself as a child. She is rather Oza and Martin Johnson, who is ready to ride on a horseback with full suiting of a hunter and has to go through this journey of life. अब उसे बाहर की दुनिया जो है वो तसव्वुरात में से इन गुजरते हुए अब उसे ये मैगज़ीन गोया उसके लिए इट हैज़ ओपनड अप अ न्यू विंडो टू अ न्यू वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ द अडल्टहुड, what she was waiting for. As a child, she was waiting for to be grown up, to be an adult. And here she is. She is now in the real world.
and the real world is full of dangers. First thing she faces, and the second thing, she has to explore it. She has to go deeper into the mysteries of this outside world full of dangers for her. तो बेटे ये दूसरा इमेज, ये पॉइंट वाइज डिटेल अब है। ये अफ्रीकी, अब इसे जाना है दुनिया, अननोन दुनिया को ढूंढने। उसके लिए एज ए चाइल्ड, दिस वर्ल्ड ऑफ द अडल्ट्स is a world of the unknown, mysterious one. She has to become an explorer, just like Oza and Martin Johnson, and has to come out of her innocent world of childhood into the mysterious, the dangerous world of adulthood. Is the world of adulthood dangerous and mysterious? It might not be as dangerous and mysterious for the adults, but it is just an unknown world for a child, and that is what the point of this stanza is. Dear students, the next 4 or 5 images, visuals, have been taken from the African life. As you people are well aware that this African continent is often labeled as dark continent still in this modern age, so-called modern age of ours. This dark continent is a symbol of cannibalism, symbol of barbarism, a symbol of wilderness, symbol of danger, symbol of humiliation, symbol of exploitation. And this is the area from where these white people, the white race of the English, brought the slaves to America and other lands of opportunity, and treated these human beings in black skin in a very inhuman way. These slave people are a target of further exploitation by these white people, to be presented as some brutal beings living in this continent that is dark, that is gloomy, that is surely a world that is full of dangers. तो बेटे अफ्रीकी दुनिया अंग्रेज़ों के लिए ख़ास तौर पर और इन गोरे लोगों के लिए एक एक्सप्लॉयटेशन प्लेस रही है शुरू ही से। आपको याद आना चाहिए कि हिस्टोरिकली ये लोग जो हैं बेचारे, अफ्रीकन पीपल हैड बीन द स्लेव्स ऑफ डिफरेंट वाइट नेशंस, वाइट रेसेस। यहाँ वक्तन फ़वक्तन कभी अहले फ्रांस, जैसे आज भी आपको पता है फ्रांस ने 3-4 जो है अफ्रीकी मुल्कों को अपने साथ मिलाया हुआ है, वहाँ वो लोग गुलामी की ज़िंदगी आज भी गुजार रहे हैं। और अफ्रीका बजाते खुद देखे आज़ाद काफ़ी सारे आपको मुल्क मिलते हैं अब बड़े बड़े, जिनमें कुछ इस्लामी मुल्क भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बेचारे महकूम हैं इन ताकतवर मुल्कों के सामने। तो तारीख़ी तौर पर यहाँ से इन लोगों को, काले लोगों को, ये बहरी जहाज़ों में भर भर के अपने, खुसूसन अमेरिका बहादुर में जैसी सरजमीन पर जब ये न्यू डिस्कवरी हुई अमेरिका की, तो यहाँ ये बच्चों को, नौजवानों को, ख़ास तौर पर औरतों को बहरी जहाज़ों में भर भर के लाते थे ताकि इनके ग़ुलाम के तौर पर इनके काम काज करें। और जब ये ज़ाहिर अक्सरियत में हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लैक पीपल टेकन फ्रॉम दिस लैंड ऑफ डार्कनेस, तो फिर ज़ाहिर है अमेरिका में वो नस्ल परस्ताना जज्बात जो थे, आपको पता है वो फाइट जो है वो आज भी जारी है। कभी ज़ाहरी तौर पर, कभी अंदर से लावा उबलता रहता है। इनके यहाँ जंगें भी हो चुकी हैं। मार्टिन लूथर किंग के करैक्टर से आप वाकिफ़ हैं। तो 1950s में आपको पता है मार्टिन लूथर किंग ने कालों के लिए बड़ा काम किया, इसी में मारा भी गया। वो मजहबी पेशवा था, बहुत बड़ा मुकर्रर भी था। आज भी उसकी तकरीरें जो हैं वो ये काले लोग जो हैं वो अपनी मजहबी अकीदत से सुनते हैं। और उसने इनकी आज़ादी की तहरीक में बहुत रोल प्ले किया, इनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की।
तो ये इमेज जो है, जो कि इस डार्क वर्ल्ड से, डार्क कॉन्टिनेंट से लिए गए हैं, 3-4 इकट्ठे, ये एक तो बुरी तस्वीर पेश करते हैं उस दुनिया की, उसे एक बुरी दुनिया के तौर पर पेश करते हैं। दूसरे, इस बच्ची के लिए दे आर जस्ट somewhat agonizing type of images. She is yet to be grow ahead. She is not a mature human being to look at these images and ignore them. She is a child. She is just having a casual look at the magazine, at the photographs of the magazine, and one by one she is going through these pictures given on the magazine pages, and the next images, as she has now become an explorer mentally, spiritually, while she is sitting there, she has gone into the world of the unknown as a rider, as an explorer. तो उसका पहला हिसाब का जो है वो आपको पता है वॉल्केनो से पड़ता है, फिर अब इमेजेस जो हैं वो गहरे होते चले जाते हैं. शी इज़ स्टीप्ड इनटू दीज इंडेंजर्ड टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर अब उस डार्क कॉन्टिनेंट का है. और पहला इमेज जो है वो कैनिबलिज्म से लिया गया है. आपको पता है वो ये वैसे हकीकत है कि अभी भी इस जदीद तरीन दौर में भी कुछ कहा जाता है कि अफ्रीका के अंदर कुछ कबाइल ऐसे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जो आज भी इंसानी गोश्त बड़ी रगबत से खाते हैं. यह कम अज़ कम उनकी रवायात में से है. तो पुराने वक्तों में तो ये यकीनन ये 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में इसकी गवाहियाँ मिलती हैं बहुत सी तहरीरों में कि यहाँ कैनिबलिज्म जो थी वो अरूज पर थी. तो पहला इमेज जो यहाँ है इन 4-5 इमेजेस में से, ए डेड मैन स्लंग ऑन ए पोल, ये उसी कैनिबलिज्म की तरफ बेटे इशारा करता है. एक डेड बॉडी एक किसी इंसान की उसे खंबे से लटकाया गया है. लॉन्ग पिग द कैप्शन सेड, इसके नीचे लिख कर लगाया गया है कि ये लॉन्ग पिग है. कैप्शन जैसे तस्वीर के नीचे दे देते हैं कि ये द पिक्चर ऑफ ए चाइल्ड और पिक्चर ऑफ समथिंग. तो ऐसे यहाँ जो है वो एक इस डेड मैन की बॉडी के नीचे जो लटकाई गई है खाने के लिए, टू बी ईटन स्वॉलोड बाय दीज ए ट्राइब. अब ये एक पूरे कबीले की तस्वीर कशी है, याद रखें, अफ्रीकी कबीले की. और ये लड़की महसूस कर रही है while sitting there that she is not seeing these pictures, looking at these photographs. She is just traveling, going right there, standing right there, looking at these people living in that dark continent Africa. The first image she comes across is the very, very horrifying image from the real life of Africa. It is the dead body of a man hanging on a pole and has got a caption, long pig. The caption said, long pig is a phrase. We will diagnose this phrase later on in our critical appraisal of this poem. तो यहाँ बस इतना याद रखें कि ये फ्रेज़ जो है वो जनरली यूज़ की जाती थी ऐसे फ्लैश के लिए, इंसानी फ्लैश के लिए, जिसे खाने के मकासद के लिए रखा गया हो, लटकाया गया हो. तो इसके साथ ये क्यों पिग क्यों यूज़ किया गया है, लॉन्ग पिग, ये हम बाद में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे. बहरहाल फ़िलहाल ये कैनिबलिज्म की तरफ ये हिंट है. बेबीज विद पॉइंटेड हेड्स, wound round and round with string. The second image in this mixed image, and this is the image of a village life present in the dark African world, the tribal life you may say. Babies with pointed heads. She now sees babies running here and there, but their heads are pointed heads, just like a ponytail. And with what? Their heads are bound with strings. रस्सियाँ घुमा घुमा के उनके सरों को लंबूतरा किया जाता है. ये एक रवाज था
इसकी तस्वीर आगे आपको मिलेगी आफ्टर रीडिंग दिस इमेज। ये बच्चों के सर पर, जैसे हमारे यहाँ नहीं, छोटे बच्चे को जैसे ही पैदा होते जब माएँ कपड़े बांध के उनका सर को गोल करने का रवाज होता है कि वो चौरस से गोल हो जाए, तो वो वहाँ जो है वो ये अफ्रीका के मुल्कों में छोटे बच्चे और ख़ास तौर पर बच्चियों के जो सर हैं उनको लंबूतरा बनाने का रवाज था, तो रस्सी से उसको बांधा जाता था कि ये सर ज़रा लंबा सा हो जाए, खूबसूरती की अलामत के तौर पर, और पॉइंटेड ऊपर को निकला हुआ सर हो, जैसे चोटी बनी हुई होती है। The next image, the first image was the image of a dead man. The second image was of a strange looking heads of the babies forced to be bound in strings. और तीसरा image, the last image, is the most horrifying. Black naked women with necks wound round and round with wire, like the necks of light bulbs. Just a comparison to make the image clear कि जैसे हमारे मॉडर्न बल्ब है ना, इनके नीचे का जो हिस्सा होता है, तो इनका गला जो है बल्ब का, अगर आप गौर से देखें तो वहाँ वो पेच बने होते हैं, वूंड एंड वूंड। तो उस वूंड एंड वूंड को, राउंड एंड राउंड को वाजे करने के लिए कि ये जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं बेचारी, इनके गले के अंदर जो है वो हार्ड किस्म की जो है वायर्स वो लपेटी गई हैं, और ये ताकि इनकी गर्दनें लंबी हों सुराही जैसी। ये भी एक रवायत, कस्टम, लेकिन ये सप्रेशन की अलामत। ऊपर जो बेटे धागा है स्ट्रिंग, वो भी सप्रेशन की अलामत के रवायात जो हैं यहाँ की ज़िंदगी की, वो सप्रेशन की तरफ इशारा करती हैं, ऑपरेशन की तरफ। तो ये यहाँ एक और चीज़ जिसका इजाफा किया है पोइटस ने, नेकेड वीमेन, दे आर नेकेड, they are living in natural habitat, as the dead man is also a dead man lying on a pole in a dead shape to be eaten later on by the people of that area, and the babies are also naked. They are running from this place to that place with their pointed heads bound by pieces of string, and again she looks at the naked women with long necks, but these necks are not naturally long. They are forced to be so by a wire cutting through and winding through their necks forcibly. Their breasts were horrifying. Suddenly, two sex images are presented here by Bishop, and this is what we call self-revelation. She is getting into the mature world prematurely. As a child, she should not have looked upon these images presented in the magazine, surely. But she is also very keen to get into the world of the adulthood. That is the point of this stanza. I read it right straight through. Then she tells us, the poetess tells us, that the child went through all these images, the dangerous images, the horrifying images, the awkward images for a child to go through. I was too shy to stop, but no, it is ये कहते हैं कि वो, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बेटे कि ये वो किसी चीज़ की तौजीह पेश करना। देखें ना, बच्चे को एक को इस तरह के इमेजेस देखने ही नहीं चाहिए। दे आर नॉट फॉर मेंट फॉर द चिल्ड्रन, स्पेशली इमेच्योर चिल्ड्रन। तो दे आर इमेजेस फॉर द अडल्ट पीपल, और अडल्ट पीपल भी ज़ाहिर है ऐसे इमेजेस को पब्लिक प्लेस पर बैठकर जो है वो देखते हुए शर्माते हैं। इट इज़ शेमफुल टू लुक एट सर्टन पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स, to be sitting in public and looking at them. But here she presents herself not to be blamed as a child.
These pictures, these photographs just came across to her. I was too shy to stop. She is now not able to stop looking at that magazine. She is not able to look away from these pictures. She is rather now engrossed, absorbed in looking at these pictures and snaps. And then I looked at the cover, the yellow margins, the date. To when she felt awkward from within at looking at while looking at these photographs given in that magazine, she suddenly looked at the cover page to hide the photographs inside that magazine. फौरी बंद कर दिया उसने मैगजीन को और उसके कवर पर नजर दौड़ाई कि देखें कि ये मैगजीन क्या है. द येलो मार्जिन्स, द डेट, स्पेशली द डेट ऑफ दैट मैगजीन. तो बेटे ये जो इमेजेस यहाँ पेश किए गए हैं अफ्रीकन ज़िंदगी के, जिनको जंबल करके पेश किया गया है, आर ऑल एक्सट्रीमली intense images. They point to the fact that the child is ready to enter into the world of adulthood. She is going to be mature. You may link this presentation of different images, visuals by Bishop to her maturing prematurely as a girl in the house of her aunt. Now, this is the image of Oza and Martin Johnson, the African explorers, hunters, wife and husband, taken from a film. Surely they might not be the real ones, but the characters presented by some actors in the movie. Dear students, to explain the image present in the poem better, here is the picture of the child with strings. बेटा ये रस्सियाँ कैसे लपेटते थे ये अफ्रीकी लोग अपने बच्चियों को या बच्चों के सरों को लंबूतरा करने के लिए, पॉइंटेड बनाने के लिए. तो ये एक उसका स्टाइल है. although it is very oppressive, very horrifying again, लेकिन ये आप देख सकते कैसे वो टोप की तरह से इसको रस्सियाँ लपेट लपेट के मजबूती से रस्सी लपेटते थे ताकि सर की शक्ल जो है वो ऐसे निकल आए जैसे ये एक ख़ास किस्म की पॉइंटेड किस्म का सर बन जाए जो ऐसे लगे कि दूसरों से मुख्तलिफ और खूबसूरत दिखाई दे. Dear children, this is again the neck wound by a wire. कैसे ये देखे ये कड़े से डालते थे वायर के बने हुए और ये बढ़ते चले जाते थे मज़ीद गर्दन को लंबा करने के लिए. देखिए ये ग़ुलामी की निशानी, कैसे ये इनको सप्रेशन. तो शायरा का जो ख्याल है ना, देखें बेटे ये इमेज को क्लियर करने के लिए यहाँ फिर तस्वीर का सहारा लिया गया है ताकि आपके जहन में पूरी तरह तस्वीर बन जाए कि ये बच्ची छोटी जो है वो 6-7 बरस की, वो किस तरह के इमेजेस देख रही है. दिस इज़ अगेन a very horrifying. Only adults can tolerate this kind of a picture. देखें ये ऑपरेशन की निशानी है, जुल्म और सितम भी है ये कि a woman is not being let to grow naturally, biologically. It is rather she is enforced to get a longer neck by force. तो ये उसे देखे ना, सांस लेने में तकलीफ़ है, कुछ खाना पीना जाए वो भी उसके लिए दुश्वार. तो ये कितना मुश्किल, और लेटना उठना बैठना चलना फिरना. तो ये जैसे ग़ुलामी का तौक गले में पुराने ज़माने में ग़ुलामों के यहाँ डाला जाता था गले में, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम ये है. आपको पता है मर्दों के गले में एक ख़ास किस्म का वो लोहे का तौक डालकर ग़ुलामी की निशानी के तौर पर रखा जाता था. तो ये उस तरफ इशारा है. Dear children, while that young girl is waiting in that room, she heard suddenly from inside came an oath of pain, Aunt Consuelo's voice, not very loud or long. When she was stunned and startled and amazed
rather horrified by the images she had to face while going through that magazine entitled National Geographic, but presenting a very dark world of the dark continent. She heard a voice of pain, a cry of pain coming out of the clinic of the room of that doctor, the dentist. She thought that it might be the voice of her aunt, but it was a low cry, not very loud or long at all. Inside is important here, from inside. Now, the child will go through different kinds of revelations, different kinds of changes of mood. She will now feel as if she has grown up after going through those horrifying images. And these vices, now the vices of the adult world coming to the present, she went to the past through those images, and now she comes alive again to the present world, where she is sitting in the waiting room waiting for the aunt to come out, and suddenly, with a painful cry of the woman inside, she is she has come out of that trance of the dark world of the dark continent. I wasn't at all surprised. Even then I knew she was a foolish, timid woman. नहीं, अब ये एक जजमेंटल स्टैंजा आप इसे कह सकते हैं. It is a judgmental type of stanza. The girl is going through different phases of passion, feelings, expressions, and change of moods, change of personality, rather, you may say, change of revelations. She is in the trance of an epiphany, a trance of a state where she is going from one world of recognition, identification, to another world of identification. First of all, when she heard this cry of pain coming from inside of the room of that doctor, she was not surprised at all by that cry, as she knew her aunt was a timid and a foolish kind of woman who could not hold her cries of pain within the limit. तो अपने दुख को अपने तक नहीं रख सकी, टिमिड वुमेन है, फुलिश भी है, तो ज़ोर से चिल्लाना क्या ज़रूरी है. इसके नज़दीक, बच्ची के नज़दीक, पेन को बर्दाश्त करना चाहिए. ऑल पेन्स शुड बी बोर्न ब्रेवली, ये नुक्ता नज़र है. तो इसलिए वो सरप्राइज़ नहीं हुई, कि उसे पता है कि ये औरत जो है ये बेहौसला किस्म की औरत है, फुलिश है, बेवकूफ़ है. इसे नहीं पता है कि चीखे नहीं मारते हैं डॉक्टर के क्लिनिक में. तो ट्रीटमेंट इज़ गोइंग ऑन physically, but it has got some other meaning as well. As I have just discussed with you people, that this travel of the girl from girlhood to adulthood has uh, gone into practice, into action. She is now going through a self revelation, self identification, self recognition, a process that is surely very painful for a young child to witness and see and feel all the feelings of an adult. I might have been embarrassed, but was not. ये आवाज़ जो अंदर से ज़ाहिर है किसी मरीज़ के चीखने की आती है, तो जो साथ आए होते हैं अटेंडेंट्स, ज़ाहिर है उनके लिए भी पेनफुल होती है, वो भी बेचैन हो जाते हैं, मुस्तरब हो जाते हैं. बट शी टेल्स अस एज अ चाइल्ड दैट शी वाज नॉट एम्बेरस्ड और स्टार्टल्ड और horrified by the cry of pain uttered by her aunt. What took me completely by surprise was that it was me, and this is a big surprise for the readers as well.
She feels that it is not the voice of her aunt, it is her own voice. She has become her aunt herself. She is now grown up. She assimilates her personality, herself, with that of her aunt. तो बेटे अब ये जो है वो अब गोया ये इट इज़ ए चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ identification, change of recognition, change of identity. She is no more a child. She is no grown up. She feels as if that cry of pain is her own voice, her own cry of pain. She is sitting in the chair before that dentist herself, not her aunt. My voice in my mouth, without thinking at all. I was my foolish aunt. We were falling, our eyes glued to the cover of the National Geographic, February 1918. The experience of those images, the seeing of those images, the photographs in the magazine, has just stunned her as a child. And it has become a shock for her. And during this shock experience, she has entered into the world of adulthood, feeling that she is now grown up. And she feels that my voice in my mouth, it is not the voice of the child anymore that is coming out of her mouth. It is the voice of an adult. Without thinking at all, I was my foolish aunt. बगैर सोचे समझे अब ये ज़ाहिर है she has lost control over herself. She is forced to go into the world of adulthood. I was my foolish aunt. The persona are intermingled now. The feelings are intermingled now. She is no more separate and alone, secluded from the world outside the adult world. She is now, she has now become one with the adult world. अब जैसे ये तन्हाई का शिकार थी ना बचपन में, ये उस तरफ इशारा है जिसको हम इंशाल्लाह क्रिटिकल में डिस्कस करेंगे. तो अब ये तन्हा नहीं रही. शी हैज़ बिकम वन विद द वर्ल्ड आउटसाइड, द वर्ल्ड ऑफ द अडल्ट्स. शी थिंक्स दैट शी इज़ नो मोर ए चाइल्ड. शी हैज़ बिकम वी विद अदर ह्यूमन बीइंग्स वर फॉलिंग. और ये एक नई दुनिया में घुस रही है, गिर रही है, अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही है. Our eyes glued to the cover, and now as she has become two in one, she is a child and an adult at the same time. Her eyes are glued onto the cover of that National Geographic issue. That issue is from February 1918. ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है बेटे कि ये इसने बाकायदा महीना और तारीख भी दी है, पूरा सान दिया है कि किस महीने में किस तारीख को ये नेशनल ज्योग्राफिक का मैगज़ीन शाया हुआ और इस पर क्या ये वाकई ये तस्वीरें हैं. तो बाद में मुहक्किकीन ने, क्रिटिक्स ने तहकीक की कि ये जो मैगज़ीन जिसका इसने हवाला दिया है उसमें ऐसी कोई तस्वीरें नहीं थी. तो ये बिशप ने इंटेंशनली जो है वो इन इमेजेस को अपनी तरफ से, सारा ये पोइट्री है, वो कोई रियल मैगज़ीन की तस्वीरें ज़रूरी नहीं हैं, अपनी उसने एक थीम को हमारे सामने रखने के लिए कि ये जो है वो सेल्फ रेवलेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिकग्निशन, ये क्या है वो, ये लोनलीनेस का थीम, इनोसेंस का थीम, अडल्टहुड का थीम, खुसूसन फेमिनिज़म की एक्सप्लॉयटेशन का थीम, ह्यूमन रेस का एट लार्ज सीन जो थीम है, ये सारे थीम्स को इंटरमिंगल करने के लिए कुछ उसे इमेजेस चाहिए थे. ज़ाहिर है उसने उनको यहाँ पेश किया है. और द गर्ल, द चाइल्ड इज़ नो मोर एन इनोसेंट चाइल्ड. शी हैज़ ग्रोन अप, शी इज़ नो एन अडल्ट, एंड शी विजुअलाइजेज द वर्ल्ड आउटसाइड, sitting here in the waiting room as an adult now. Dear students, this process of change, this process of self exploration,
self-identification, self-revelation, epiphany is not only very startling for a child, but also very wonderful. I said to myself, 3 days and you will be 7 years old. She is not yet 7 years old. Their 3 days are to be left there. 3 दिन अभी कम है 7 साल की उम्र होने में, ये 6 और 7 के दरमियान की एज है, तो क्वाइट एन इमेच्योर एज, चाइल्डहुड, अभी लड़केपन में भी नहीं गई है। तो अपने आप से मुखातब होकर कह रही है कि हैं अभी तो तुम बची हो। आई वॉज सेइंग इट टू स्टॉप द सेंसेशन ऑफ फॉलिंग ऑफ। देख, resistance on the part of a child, not to go into the world of the adults prematurely. The sensation of falling off the round turning world. अभी ये उस दुनिया में जाना नहीं चाहती है, इनोसेंट वर्ल्ड ही में रहना चाहती है, उसी आइसोलेशन में, उसी मासूमियत की दुनिया में। लेकिन शी इज़ फोर्स्ड टू फॉल ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस इनटू द वर्ल्ड ऑफ अडल्टहुड। तो सेंसेशन जो है ना, ये उसको रोकने के लिए जो उसके अंदर, इस उर्दू में आप उथल पुथल कहते हैं, वो जो उसके अंदर जो एक ह्यूरिकेन जो है वो उबल रहा है, और वो वोल्केनो उसके अंदर अब गोया अमली तौर पर एक बर्न कर रहा है, उस फ्लेम को, उस फायर को पुट डाउन करने के लिए वो कहती है कि अपने आप को समझाती है, शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू कंसोल एंड ट्राइंग टू advise herself that she is not yet 7 years old, and why she is thinking to be an adult, just feeling the feelings of an adult. She should stop by that very moment, and she should not go into the world of the adults, turning world that is surely turning up and upside down into cold blue black space. The outside world is cold, horrifying, dangerous, blue black space. This is all but space, empty space outside. But I felt you are an I, you are an Elizabeth, you are one of them. This is the conclusion of this self-revelation, the epiphany she is going through. She has become one of the adult people. No, she is no more a child, but I felt that she has now to suffer just like the adults. She has to experience all those experiences the adult people face. You are an I, you are an Elizabeth, or just like her aunt. You are one of them, and you know have become one of these adult people sitting all around her in that waiting room. Why should you be one too? I scarcely dare to look to see what it was I was. अब अपने आप से ये सवाल जवाब का वही बिशप का वो पुराना तरीका है जिसके आंसर्स जो है वो रीडर पर छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो इसके अंदर हिडन जवाब भी होता है। Why should you be one too? एक बच्चे को क्या ज़रूरत है कि वो जल्दी से जो है वो बड़ा हो जाए, एडल्ट बन जाए। आई scarcely dare to look to see what it was I was. डरती है अब ये कि इनोसेंट वर्ल्ड में वो क्या थी और अभी ये क्या हो गई है। उसे खौफ आ रहा है नई दुनिया के एक्सपीरियंसेस, वंडरसम एक्सपीरियंसेस से। शी इज़ हॉरिफाइड टू गो इनटू द वर्ल्ड ऑफ द adults, but is forced to do so, has to go to the adult world. Dear students, as the young child has gone through different phases of self-revelation, now she is going through different phases of feelings. She is sitting there in the waiting room surely, but she is traveling through different kinds of feelings from inside. अब बेटे कभी ये प्रेजेंट में है, कभी पास्ट में है, कभी फ्यूचर में जा रही है। तो ये एक तरह से ये जिसे हम कहते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शी इज़ फेसिंग देयर, सिटिंग देयर। तो ये बेटे मुख्तलिफ फेजेस हैं इसकी फीलिंग्स की जो वो हमारे सामने
शायरा जो है वो रख रही है, एक बच्ची जो है वो वहाँ बैठी क्या सोच रही है, उसकी सोचें, उसके महसूसात, उसके पैशंस, उसकी फीलिंग्स क्या हैं while going through this very horrifying, shocking experience of epiphany. Is it an epiphany or something else? We will discuss in our critical review of this poem, inshallah. I gave a sidelong glance. I couldn't look any longer or higher. वहाँ longer था, यहाँ any higher. ये ज़रा कंपेयर करते जाए ना पिछली लाइनों से. I gave a sidelong glance. चलती कंकियों से देखा, आंखें चुरा के, जैसे नज़र चुरा के देखते हैं. I could not look any longer. She is feeling shameful, shy. She has just seen those pictures forbidden for children, only meant for the adults. Unfortunately, for her, for that girl, she has taken up a magazine that is not meant for children. Although it is a National Geographic magazine, it is also very ironic that a National Geographic type of explorer type of magazine has put those pictures, horrifying pictures, photographs in its issue. And now she is feeling that she is shameful, shy. The other adults sitting around her might think about her that she is an insolent, rude type of child. तो वो दूसरे लोगों से ऐसे महसूस कर, अगरचे किसी ने इसे कुछ कहा नहीं है, ना ही देख रहा है कोई इसको, आप हर कोई अपने अपने दुख में उलझा हुआ है, बीमारी में उलझा हुआ है, तो लिहाजा इसके बावजूद शी इज़ फीलिंग शाई. आई कुड नॉट लुक एनी लॉन्गर एनी हायर. अब ये नज़र ऊपर उठा के देखने के काबिल नहीं अपने आप को महसूस करती, तो कंखियों से जो है वो उसने देखा कि कोई लोग तो नहीं देख रहे हैं इसको इस तरह का अडल्ट मैगज़ीन पढ़ते हुए, देखते हुए. एट शैडोई ग्रे नीज, तो इसे इर्द गिर्द लोगों की जो प्रेजेंस है वो ये नज़र आई. ग्रे नीज हैं, लेग्स हैं, ट्राउज़र्स एंड स्कर्ट्स एंड बूट्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट पेयर्स ऑफ हैंड्स लाइंग अंडर द लैम्प्स. लोग वहाँ बैठे हैं बुरियत के साथ, तो उनकी बस फिगर्स दिखाई दिए इसको. एंड दे आर नॉट लुकिंग एट हर. I knew that nothing stranger had ever happened, that nothing stranger could ever happen. तो कोई चीज़ अजीब जो है वो ना हुई है, ना होगी. She had been the same all through her life. There has nothing been startling, stranger, nothing extraordinary. So nothing could happen. Nobody is going to ridicule her or chant her or say any bad words. She is still in the world of innocence as well as in the world of adulthood. Both worlds are intermingled, merging as one at the same time for her. तो बेटे ये सिर्फ मंजर है, उसके महसूसात को बयान किया गया है कि वो बच्ची अब महसूस क्या कर रही है. She is feeling shy, shameful, but she is also feeling that she has grown up. Just looking sideways, she again falls into reverie, falls into her self-discovery. Why should I be my aunt or me or anyone? क्यों भाई मैं यकदम अडल्ट हो जाऊं, या इनोसेंट ही रहूं, मी, या कुछ और बन जाऊं. Why this enforcement on me? Why I am being enforced to change my personality, to change my identity? What similarities? Boots, hands, the family voice I felt in my throat, or even the National Geographic and those awful hanging breasts. Again, she goes back to the image again. तो ये क्यों ये सिमिलैरिटीज़ मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं अडल्ट हो गई हूँ इन लोगों की तरह से जो कि मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं. मुझे लग रहा है कि मेरे बूट्स मैंने भी वैसे ही पहन रखे हैं, मेरे हाथ भी इन जैसे हैं, और ख़ास तौर पर उसकी आंट की जो आवाज़ है, फैमिली वॉइस, जो मुझे अपने उसके गले में महसूस हुई कि मेरे गले से निकल रही है. वो चीख कोई आंट के गले से नहीं, मेरे गले से निकल रही है. तो वाई आई एम फीलिंग दैट आई हैव बिकम एन अडल्ट
suddenly from an innocent child. And again, that image is haunting her mind and soul. Hanging breasts, the body uh, hanging there, uh, and the hanging breasts of the naked women. Those images, horrifying images, are haunting her mind and soul. And she feels that she is being forced to go into the world of the adulthood by society, by these similarities. She is feeling these similarities. And dear students, as you know, it is very common in Bishop to have these questions. And she again puts the question, held us all together or made us all just one. These images which she has gone through in the present, the people sitting around her, adults sitting around her, and the images she has just gone through by that magazine, in that magazine. Why all these things are forcing her to be one with the adult world, made us all just one? How, I didn't know. How, इसे नहीं पता अब ये हम पर छोड़ रही है. आई डिड नॉट नो एनी वर्ड फॉर इट. मुझे अब इसकी ये जो तब्दीली आई है इस बच्ची की, ये यकदम इस एपिफनी में और इस रेवलेशन में, नई रिकग्निशन में, नई आइडेंटिटी में. शी as a child identified herself as a child, but now she is identifying herself as an adult. And this change of recognition, identity, is strange for her. She is not able to find any proper word for this change of revelation, change of identity. How unlikely. This is very unlikely for a child to be an adult at the same moment. How had I come to be here like them and over here? A cry of pain that could have got loud and worse than, but had not. तो ये सफरिंग जो है उसे क्यों मजबूर कर दिया गया कि वो यहाँ आए और ये वो क्राई ऑफ पेन को महसूस करे, सुने, और ये इससे ज़्यादा हो सकती थी ये दुख, ये दर्द दुनिया का. What is this cry of pain is surely the cry of human beings. And now she has to go into the world of the adult where there is pain, and that is worse, even bigger pain and loss she has to suffer when she becomes an adult herself. What she is pointing to as a poetess, the poetess Bishop, is that as a child she is shy of entering into this world of suffering and pain of the adults. She is not yet ready to go into this world that is unknown for her, unidentified for her, but she is being forced to go into that world of the adults, the world of the larger world, the global world around her, the outside world of her own self. अपनी ज़ात से बाहर की ये दुनिया जिसमें मजबूरन उसे धकेला जा रहा है, ये दुनिया जो है वो बड़े दुखों से मामूर है. Dear students, in the concluding stanzas, the revelation or this travel or the journey of the soul of that child is still going on. This is a journey, very cruel journey, that is taking apart, rather just crushing apart her soul, and she is feeling something like a very painful experience. The waiting room was bright and too hot. अब उसे जो है वो बड़ा इसमें ये रो ब्राइटनेस जो है, इट इज़ द ब्राइटनेस ऑफ एल्यूमिनेशन, एंड टू हॉट, और ये वो है वॉल्केनो पैशंस की हॉट हीट है. अब ये अंदर से अब वो गर्मी जो महसूस कर रही है, एंड दिस इज़ आल्सो द हीट ऑफ प्री मेच्योर एडल्टहुड. ये दोनों तरफ इशारा है बेटे. ज़रा ये लाइनें हम एक्सप्लेन करेंगे, मुश्किल लाइनें हैं. इट वॉज स्लाइडिंग बीनीथ ए बिग ब्लैक वेव. अब ये अपने आप को ऐसे लग रहा है इसे जैसे ये
झूल रही है दो दुनियाओं के दरमियान, another and another. She is just wavering in between two worlds, world of the innocence and the world of the adulthood indeed. Sliding, ऐसे जैसे प्रेसिपाइस में वो गिर रहा हो, ऊपर से ढलवान से नीचे फिसल रहा हो। तो इनोसेंस की ढलवान पर खड़ी थी और अब ऐसे जो है वो नीचे जो है वो ये वेव बाय वेव, ये जो है लेयर बाय लेयर, शी इज़ डाइविंग डीप इनटू another world of identity and another world of heat, brightness. This brightness is the brightness of illumination. She is being put into another experience, that is self revelation. Dear students, in the last concluding stanza of the lines of the poem, Elizabeth Bishop brings back the child into the present world, the world of reality. Then I was back in it. The war was on. This war. What is this war? Is it the World War First or the World War Second? Practically, which Bishop avoided to hint in his poem, in her poems, or is it the war that is the battle of the soul that is going on inwardly in the soul of that child outside in Worcester, Massachusetts? ये जो जंग अंदर जारी थी इसके लड़की के, उसमें से निकल करके, जिसे वार ऑफ द सोल आप कह सकते हैं, ये दो दुनियाओं के अंदर जो जंग हो रही थी, इनोसेंस और अडल्टहुड के दरमियान जो जंग जारी थी, उसमें से निकल कर, उस शिकंजे से निकल कर, एल्यूमिनेशन के इस एपिफनी के शिकंजे से निकल कर वो बाहर निकली है और अब जो मौजूदा प्रेजेंट उसकी सिचुएशन है उसमें वापस आ गई है. सिटिंग इन दैट वेटिंग रूम where she is waiting for her aunt to return from the clinic of the doctor, the room of the doctor in Worcester, Massachusetts, were night and slush and cold, and all around it is the same atmosphere. It is dark outside, night time, and it is cold, and there is a cold nip in the air, and it was still the 5th of February 1918. तो ये अभी भी वही तारीख है, यानी प्रेजेंट में ये वापस आ गई है. आफ्टर गोइंग थ्रू दैट हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ हर सोल, entering into the world of the adulthood, but coming back into the world of innocence, the present world, the reality, she has gone through a very big experience indeed. Dear students, outwardly the poem is very simple to read. It presents the scene of a dentist's clinic where different patients and their accompaniments are waiting for their turns to be treated for their tooth diseases or some pains, some kind of suffering. A child accompanied by a girl, accompanied by her aunt, comes there to the clinic of the dentist. She has to wait for the return of her aunt who is being treated in the clinic, and she sits among other adult human beings in the waiting room of the doctor. And what she experiences there while she is sitting among the adult people is a very unique experience for a child. She goes on a journey of soul diagnosis, a soul searching opportunity for her, a soul discovery, a revelation, an identity. The poem presents us with different themes, my dear students. It has got the theme of isolation, in which the poetess was forced to live her life as a child. Then there is the compulsion of being one with the world. She has to be one, she has to leave aside her isolation
self-imposed isolation, rather you may say. She has to mingle up with the outside world, the practical world, the world of the grown-ups. The adulthood then comes ahead as a theme, and that has been elaborated by simple explanations of images put together here in form of a picture, rather you may say. This poem is also in itself a picture of a cosmos, a very small world, a microcosm presented in the poem, just like the poem Filling Station. Then again, we find the theme of feminism lurking through the lines we have just gone through. The woman exploitation at the hands of men, man-made society. The voice of women is to be heard in the poem in a very louder way, you may say. And again, there is the comparison and the theme of innocence versus adulthood, childhood versus adulthood, and that is a very apparent theme presented here. Then the liabilities forced upon, why a child is forced to go to the world of the adulthood. Is it proper to give a child a chance to look at certain images which are not meant for children, which are only meant for the adult people? These are the questions we have to answer in our discussion later on on this very poem, in this very poem. Again, uh, my dear students, the poem has presented different types of questions for us. This self-revelation, the search of an identity, is the main theme of the poem, surely. No doubt in it that Bishop is after her soul searching, uh, or rather a discovery of her soul, the discovery of what she is. And again, although she avoids agonizing themes like presented in this poem, the presentation of naked women, although she tried to avoid these images all through her life, remained a very balanced poetess. But here they are presented for some purpose. To be very clear and to be very exact, these images presented here point to the exploitation of women folk in the modern world. That is again the voice of feminism, you may say. Then surely there is a hint of metaphysics present in the poem. We will discuss inshallah in detail in our next meeting. तो बेटे ये चंद नकात को मैंने नज़म के अख्ताम पर आपकी सहूलत के लिए आने वाली डिस्कशन में ताकि हम इनको डिपिक्ट कर सकें पेश किया है. Till our next meeting in this very poem, in the context of this very poem, see you soon inshallah. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much for your participation and bearing with me. Thank you very much again.